Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Hello and welcome to our first live talk show from the platform of Dairah. This is Muhammd Osama, your host, and working in Venture Dive as a senior design manager. I'm really grateful and delighted that you are giving your available time for this amazing initiative of Dairah. Daira is already working on many initiatives. We have conducted some webinar. We have released 5 episodes of podcast so far. We have also facilitating workshop in school as a Daira classroom. We just introduced our Daira shorts on Instagram, and now we have just announced our another initiative of Daira, which is called Daira Talkshow. So without further delay, I'm about to interview the most experienced and one of the famous designer in our industry, Mr. Taha Azam. So Taha, welcome to our show. Uh, कुछ अपने बारे में बताएं and your journey and your how you reached at this stage. अस्सलाम वालेकुम पहले तो सबको। और आई थिंक आपने यू काइंड ओवर सेलिंग के मोस्ट एक्सपीरियंस और ये वो ऑब्वियसली मतलब वन ऑफ द फ्यू डिज़ाइनर्स, मतलब इतने सारे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली अबाउट माई जर्नी, जैसे कि काफ़ी बार बता ही चुका हूँ मैं, मतलब आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। आई ग्रेजुएटेड इन 2015 मिड यूनिवर्सिटी। ही जो है ना वो डेवलपमेंट से कोफ भी होती थी, और जो है ना वो रियलाइज होता था कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कोडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे आता था प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू सॉल्व और हु आर वी ट्राइंग टू सॉल्व फॉर। वहीं से, और उससे पहले आर्ट्स में तो वो तो खैर क्लीशेड स्टोरी है, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इनटू आर्ट्स, और फिर आपको पता चलता है कि देयर इज नो करियर दैट यू कैन मेक आउट ऑफ आर्ट्स। तो आप बोलते हो कि यार अच्छा फिर क्या करें, तो लोग उस वक्त ये हुआ कंप्यूटर साइंस में चले जाओ। फिर उससे डिजिटल और आर्ट और उसका जो मिक्स बना, वहाँ पे ये समझ में आया कि पहले ग्राफिक्स में स्टार्ट किया मैंने, वही ग्राफिक डिज़ाइन से पोस्टर्स यूनिवर्सिटी क्लब्स के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। फिर वहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो था वो यही था कि मतलब डिज़ाइन, मतलब यूएक्स डिज़ाइन मैंने एक्सप्लोर किया उस वक्त, और बड़ी फ्रेश किस्म की फील्ड थी उस वक्त। जो है आई थिंक 2015-16 की बात है, और बस तब से कर रहे हैं डिज़ाइन, तब से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। फाइंडिंग एक्स की तरह है ये। Yeah, definitely. So, what was the first thing you wish before becoming a UX designer? जैसे हमने बोला कि कंप्यूटर साइंस पे आपने ग्रेजुएशन की थी, तो आप कंप्यूटर साइंस पे ही जाना चाहते थे या फिर यूएक्स डिजाइनर आपने सोचा कि मुझे ये इसी पे करना है? या मिक्स फीलिंग्स अबाउट दिस बेसिकली। सही है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स से इंटरेस्ट बचपन में ही था, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से एक्सेस था। कंप्यूटर्स का तो होता है ना कि मतलब आप सेवी हो जाते हो थोड़ा बहुत, यू आर इनटू टेक, यू कीप एक्सप्लोरिंग थिंग्स। मैंने फ्लैश वेबसाइट्स बनाई हैं, मैं जो हूँ, हम लोग इनिशियली वी हैड लाइक 486, उस पर आप डॉस में जो है वो कमांड्स लिख लिख के गेम चलाते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा खतरनाक किस्म का यूजर एक्सपीरियंस था उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बट ये है कि आई थिंक इवन फाइनल ईयर में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट इनटू कोडिंग। मतलब आई हैड फन कोडिंग, आई हैड फन डिबगिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें आई हैड फन। सही, ऐसा नहीं है कि लॉजिक बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम्स थे, बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट, जहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वो मुझे वहीं पे होती थी। कि मतलब यूज़र रिसर्च का जब मैंने पढ़ा पहली बार, और एक कोर्स होता है यूजुअली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, जनरली पाकिस्तान में जो है वो इतना there's not much awareness around it, ठीक है, but there's a course called HCI which is actually short for human computer interaction, which is basically the whole field opens up from there। ठीक है, और these are the terms जो UX से पहले होती थी, human computer interaction, how will people be interacting with it, what will happen, disclaimers, errors and all that kind of stuff came out of it। तो बस वहीं से ही जो है वो डोमेन फिर डिसाइड हो गई थी कि नहीं, डिज़ाइन में ही जाना है। काफ़ी लोगों ने मुझे, everybody obviously, when you're a graduate of computer science, people are like, yeah, tech has more money, tech has more, job opportunities. And I think back in 2016-15, a lot of friends even told me, advised me against pursuing the passion. So but I stuck with it and proud of So, it. yeah. So you are working in Seera, right? As a Yes. product designer. Yeah, so I'm working at Seera Travel in Dubai as a lead product designer, and we are working basically on travel accommodations, and I'm basically working in the wing called accommodations. So do you think product design is your passion or your market need? Obviously a mix of both. It's nice that my passion pays well, but matlab, I wouldn't say like
it's one or the other. जैसे obviously like there was UX designers, there were web designers previously. उसके बाद now there are product designers. उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि there's new terms coming out which are more into niches like let's say growth product designer और Hmm. इस तरह. So I think this is something that has been our job since forever. ठीक है, web designer जो है वो I think in 2000 early 2000s they were doing the same job in a different way, but they were doing kind of the same thing. They were validating stuff differently. Now we have a more thought through process, and obviously there's more value of designers because business has seen it and approved it. So I think it works well for me in any case. But I mean, like, it's a mix of both for me. Again, like, passion first. I did not know it Passion had so first. much money. Yeah. It was only when I came into the field and the field developed so rapidly is when I also, वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, आप क्वालिटी के लिए जाएं फिर. So that holds true for me. Good to hear. Alhamdulillah. So, by the way, how do you describe yourself in one word? Obviously, in a nutshell. वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. इसके सेफ वर्ड्स कम है असल में. um, गूफी बोलेंगे आप. Goofy. गूफी इज द वर्ड. ठीक है, तो मतलब आई एम ऑल Nice. अबाउट लाइक यस देयर आर सीरियस थिंग्स इन लाइफ, स्ट्रेस सबको होता है, सब चीजें होती है, बट आई थिंक लाइक वी टेक लाइफ टू सीरियसली. इवन आप किसी भी एस्पेक्ट्स देखें रिलीजियसली भी, इतनी सारी चीजों से इतना अटैच होना और ये सब चीजें, मतलब इट्स लाइक सब हो जाएगा, मतलब सब सही है यार. आप पार्टी होनी चाहिए, पार्टी करिए. Yeah. Party हो रही है. यस. अच्छा जी. Uh, so, when you designed for the first time, what was that? And what was the client's response on it? फर्स्ट सॉरी. First design, कुछ भी हो सकता है, वो graphics पे हो सकता है, वो ओह. UX पे हो सकता है. फर्स्ट डिजाइन जो मुझे याद है अभी वो, आई थिंक, And also how you sell it out. हाउ यू Sell it out. हाउ यू सेल इट आउट. यार प्रोफेशनली बात करें या कुछ भी, फर्स्ट डिजाइन डिजाइन. कुछ भी हो सकता है वो. किसी के लिए किया हो, अपने लिए नहीं. अच्छा, ये फर्स्ट डिजाइन तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं हम. लाइक दिस इज इनटू स्कूल टाइम्स व्हेन पावर पॉइंट एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, उसके साथ आपको काम करना होता था. और वही मैं बता रहा था, जैसे फ्लैश पे आई थिंक 8th क्लास की बात है, हम लोग उस वक्त फ्लैश 5 हुआ करता था जिसपे वो अनियन फ्रेम्स के साथ एनिमेशंस बनती थी और सारी चीज़ें बनती थी. तो वी हैड लाइक अ कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट, लाइक साइंस फेयर आ रहा था, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट नीशेस थी. ऑब्वियसली आई चोज कंप्यूटर साइंस, और उसमें हम लोग व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज लाइक वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी मिनिएचर वर्जन ऑफ अ वेबसाइट के. उसमें चार तीन चार टैब्स थे, उसमें एक 3D एनिमेशन मुझे बनानी थी कि मतलब किसी तरह भी एक 3D एनिमेशन हो जाए. तो ऑब्वियसली यूजिंग नो 3D टूल्स, फ्लैश में ट्यूटोरियल्स थे बहुत सारी. एक बुक थी मेरे पास, द फ्लैश 5 बाइबल कहलाती थी, बहुत मोटी सी, मेरे कजन से मैंने बोरो की थी, वेरी इंटरेस्टिंग बुक. और आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई मेड. और मतलब क्लाइंट तो नहीं बोलूंगा, टीचर टीचर बोलूंगा. बट पहले तो उन्होंने उनको समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट ना, मतलब कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन में. बट देन शी सॉ इट एंड इट वाज लाइक it was a good thing. I even like during the whole science fair, it was very interesting to see. So many there used to be like flash animations back in the day, like stick animations, a stick figure versus you or versus the cursor. तो वो सारी चीजें उस पर डाली थी, तो फन एक्सपीरियंस. अगर आप मुझसे बैड एक्सपीरियंसेस पूछते हैं तो वो तो फिर आपको पता है, there's a long list of those. कुछ तो मुझे भी याद है. Let's not go there. By the way, do you have any mentor A few. जिसको देख के आप इस फील्ड में आए? जिसको देख के मैं इस फील्ड में आया. ओके. सो देयर इज दिस गाय हु इज एक्चुअली ग्रेजुएट ऑफ फास्ट ऑल्सो. आई थिंक वो सीनियर बैच 2007 के इनटेक होंगे, तो आई थिंक 2010-11 के ग्रेजुएट होंगे. हिज नेम इज ताबिश, सैयद ताबिश. ही इज इन गूगल राइट नाउ, आई थिंक इन गूगल और इन फेसबुक, आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट फॉलोइंग हिम, आई एम नॉट इन टच विद हिम, बट लाइक इंस्पिरेशन कह सकते हैं आप, नॉट अ मेंटोर बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नॉट मेंटोरिंग मी. But he's the guy who actually, like, I knew I wanted to get into design, graphics, arts, whatever it is, but the actual path was actually like I got inspired by him, his journey. He was working in Adobe at that point as an intern, I think, from his university. He was studying in SCAD University, SCAD School of Design in US. तो उनका काम देख के I was very inspired. I heard great stories about him while he was at Fast. He put up like there is legacy that he left behind in terms of design. So that was very inspiring, and that is what keeps me going. In terms of mentors, obviously there's a few people, Shoaib Khan being one of them. Obviously, like one of the key pillars of my career. Obviously, again, like I didn't come into design because of him, but when I met him, obviously, like that was my first job, first proper job at Venture Dive. I've been doing startups before, but
जो जॉब वेंचर टाइप में थी उसमें मतलब दैट वाज लाइक अ होल न्यू लाइक रीबिल्डिंग ऑफ व्हाट और हु आई वाज एज अ प्रोफेशनल. तो उसमें उनका ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ है. इवन एवरी नाउ एंड देन वी गेट इन टच विद हिम talking about like problems in my career, even personal life. Like there's a lot that goes on there. So yeah, these are some names that come to mind. Again, I चलो. think like worth mentioning ek aur Awais Imran, UXDP. A lot that I've learned from the guy and the group. So kudos to that initiative too. ऑल्सो डू यू थिंक कि मेंटोर आपकी एक लाइफ में होना लाजमी है? यस, आई अग्री. हालांकि मतलब आई डोंट हैव लाइक अ फुल ब्लोन मेंटोर या कोच जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर एक वो. एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ व्हाइल, बट अगेन लाइक इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं. यू like for me, I don't know like for sure if I can make the time for it, and if I find the right mentor. It's very important to find the right mentor who suits you and your needs and your goals and your passion, because everybody is a different kind of a person, right? And they have different kinds of goals. They will mentor you, or they might give you some, I don't know, bad vibes or whatever. So that's why I don't have like a fixed guy, go to guy, but I have like a few people here and there that I go to every now बट and then. आपने किसी को मेंटोर दिया है? बहुत सारे लोगों को. ऑब्वियसली लाइक पीपल रीच आउट. बहुत सारे लोग हैं यूनिवर्सिटी से, जब व्हेन दे फाउंड आउट लाइक आई गॉट इनटू डिजाइन, आई गॉट अ जॉब, इट वाज पेइंग लाइक मॉडरेटली, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि यार वी शुड फॉलो द फील्ड. फिर दे रीच्ड आउट, दे वर लाइक क्या सीन है इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है, व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड दैट काइंड्स ऑफ स्टफ. इवन लाइक टू दिस डे आई कीप गेटिंग इनटू टच विद पीपल ऑल ओवर द कंट्री. मतलब यूएक्सडीपी पे हुआ है, काफी जगह हुआ है, मतलब कीप्स हैपनिंग. चले, So yeah, नाइस टू हियर. चले, लेट्स टॉक अबाउट सम ब्लंडर्स ऑफ योर लाइफ. मेजर ब्लंडर इन योर प्रोफेशनल लाइफ. मैं आता हूँ, मुझे बुला रहा है कोई. प्रोफेशनल या कुछ भी पर्सनल, कुछ भी. पहले प्रोफेशनल फिर पर्सनल. पहले प्रोफेशनल फिर पर्सनल. प्रोफेशनल ब्लंडर तो बहुत है. आई थिंक वन ऑफ द की हाइलाइट्स इज लाइक इन द लास्ट कंपनी इन मलेशिया व्हेन आई वाज देयर. एक जो है वो हम लोग एक इनिशिएटिव पे काम कर रहे थे. वी लाइक रिवैम्पिंग लाइक अ होल इन हाउस टूल, जिसमें काफी सारे ऑब्वियसली लेगेसी था, इश्यूज थे. तो वी वर ट्राइंग टू रिवैम्प इट, एंड व्हाट हैपेंड वाज लाइक आई वाज ट्राइंग टू गेट लाइक सम यूजर डेटा और रिसर्च, बिकॉज लाइक कस्टमर सपोर्ट पीपल वर इंटरनल. So we had like a very informal way of talking to them and gathering insights, like what are the problems, what are the key problems that they're facing, the key gaps in the current product, and that kinds of stuff. So I set up a meeting with the head of the department, head of like my own manager, and we had the head of like product, and I think yeah, head of product. So we three, like I said, a meeting. But the problem was like I was working from Pakistan then, like I was remote, so I was like actually 3 hours earlier. So I set up a meeting which was initially supposed to be at noon their time and 9 a.m. for me. But what happened was like somebody had a clash and then moved the meeting to 9 a.m. for their time in Malaysia, and I slept through. Obviously, like that's one of the one of the key blunders. If yeah, नाइस. so it was a very exciting turnout, and then people ended up having the meeting without me. But like the good thing was like it was a recorded meeting, so even though I wasn't there, and a plus point here was like I left an agenda in the meeting, so just these guys thankfully went through the agenda. It went आई good. होप आई होप फायर ना कियो. नहीं नहीं यार, just not एंड fireable. व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? ओह, अच्छा, पर्सनल लाइफ के ब्लेंडर भी ऐसे ही हैं कि मतलब इन्हीं चीज़ों से इतने रिलेटेड हैं, ये नींद वाले इश्यूज और टाइम वाले इश्यूज. बट आई मीन लाइक आई डोंट नो. So I think this goes back all the way to my 11th grade first year, जो इंटर का होता है उसमें. what happened was like मेरे कजन्स साथ, मतलब मुझसे सीनियर थे 1 साल. तो 2 साल, दो थे कजन्स, दोनों भाई थे. तो वो दे वर वेरी गुड इन स्टडी, सो दे वर लाइक काइंड ऑफ ट्यूटर्स फॉर अस. लाइक वी डिडंट एवर हैव लाइक, आई डिडंट हैव लाइक अ ट्यूशन even थ्रू आउट लाइक स्टडिंग, जो भी मेरी एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस लाइफ थी. But what I had was like these guys, right? So what they did was like I went to their place and we stayed there while I was studying. और ऐसे होता था कि मतलब स्टेज के लिए चले जाते थे 10-10 दिन जाके, उनके हम मतलब स्टे हुआ हुआ है और पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक, बहुत स्ट्रिक्ट. Like they were not like the kind of people who are like kidding about studying. These are the people who I owe my degrees to. सही है, मतलब इंटर तक तो मतलब if they weren't there, like I wouldn't have been able to even clear. So what happened was like this guy told me like, hey, you are the only one who's gonna be at home alone, and I'll be going to get like a big amount from the bank, because like उस वक्त हालात आपको पता है. I think this was back in like 2009 10 sometime, I don't remember, like
12 years ago, man. Damn. So he told me, like, stay awake. I'm just going. He gave me the book and he's told me, like, you have to complete this chapter. Like, imagine giving like an 11th grade student a book and then telling him to stay awake. Naturally, what happened was like I fell asleep, and I'm known to be a very deep sleeper, even till date, like alarms, and it's very difficult to wake me up if my sleep is not like, adequate. So what happened was like these guys, he came back, he tried to wake me up through phone, through the door, through everything. It took him like 1 hour. And then his phone battery died and he had no choice, but he went to like this key maker guy who was like an old key maker we knew like from very long. Like he had like a shop uh, at my nanny's place. So basically like we knew him as a friend, right? He got him, they opened like the lock and everything after like another 30 minutes because it was locked from the inside. So the grill Mhm. had like a space and he had like trouble opening it, and then he opened it. They came inside, and then the guy actually like he was like so he changed his attire. Then I think he went to umrah and he got bald. So he what he did was like he wrapped this what's it called, like पठान लोग जो लटकाते हैं ना यहाँ पे वो मफलर टाइप या क्या होता है वो, साफा बोलते हैं उसको, वो हाँ टोपी। safa type. So he wrapped it on his head and they pretended it to be like a robbery kind of thing, and he woke me up, and the first thing I told him was like जा यार सोने दे मतलब. I'm that bad. Like when it comes to sleep, man, I'm such a deep sleeper कि मतलब nothing moves me. तो मैं उसको सो गया मतलब this went on for good 10 minutes. उसने मुझे उठाया प्रॉपर चमाट मार के कि भाई wake up like. और the cousin like he had the envelope showing from his pocket and he's like asking me about keys, and I tell him like, he asked me like, who's this guy, do you know this guy? I'm like, no, I don't know who this guy is. I don't know who you is. He's like, what you doing here? I'm like, I just come for a tuition. This is my tuition center. I don't know these guys. He's like, oh wow, so these guys left the house on you and you're sleeping here. I'm like, yeah, I don't know where she is. Like this tuition auntie, which is actually my mom's brother's wife, my Mm. mommy actually. Okay. So, it keeps every family event you come to, somebody will you know tell this story about me. So yeah. So what time do you wake up now? And आज से 5 साल पहले कब उठते थे? सुबह. Depends if it's a weekday or a weekend, but I generally switch towards earlier hours. I wake up around 9 10. If let's say everything is on routine weekdays, usually I wake up. It's okay. I'm managing now. Previously it was really bad. I usually woke up around like let's say 11 noonish, and I was late to work almost every day. uh, जो अभी बीच में कोविड के टाइम से when we were remote, like I didn't even wake up in the days. I usually woke up after like let's say 1 or 2 p.m. But like that's So confidential information. so ये रूटीन चेंज कैसे हुआ? यार वर्क फ्रॉम होम नहीं है ना अब. लाइक आई हैव टू बी इन द ऑफिस. आई एम अ मोर सीरियस मैन, ग्रोन अप लीड बन गए हैं तो Hmm. सही वाइब्स ब्रो. चले, नाइस. या टॉक शोज So मैन, टाइम टॉक पे शोज आना. पे आना है बिल्कुल. So नहीं है. by the way, what was your first salary, if you want to share? ओके. 2015 इस्लामाबाद में मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था वेंचर लाइफ से पहले. फर्स्ट सैलरी जॉब जो थी उसमें मेरी सैलरी थी 65,000 रुपीज़ उस वक्त. और गलती से तो बस. नहीं देती? नहीं भाई मतलब डिमांड, डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह. आप आपकी है, फिर क्या चीज? नहीं, एक्चुअली आई मेट दीस गाइज इन प्लान 9 जब हम लोग अपना स्टार्टअप लिए गए थे. दे वर आल्सो देयर, बट देन दे वेंट टू ब्लैक बॉक्स वाईसी, और फिर उसके बाद दे वर हायरिंग फॉर इस्लामाबाद, तो आई आल्सो मूव्ड लाइक फॉर देम. सो ये नंबर है. नाइस, मेक नाइस. व्हाट यू वांट टू आउट ऑफ इट. अच्छा जी. So by the way, what's the one skill that you possess that most people don't know about you? मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट मी. ऐसा कोई हाँ, स्किल नहीं है. कुछ तो होगा. मेरे पास ऐसे स्किल हैं जो मेरे पास है नहीं, बट पीपल नो अबाउट मी हैविंग देम. सो देयर कैन नेवर बी अ स्किल दैट पीपल मे नॉट नो ऑफ. There can Oh, always be skill that people know of I have, but I wouldn't have in reality. So that's that's the kind of person I am. कुछ तो होगा कि जो एक हिडन स्किल हो. Hidden skill तो कुछ भी नहीं है यार. ऐसे तो प्रोफेशनल, इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो सकता है वो. ओह, पता नहीं. ये तो अब तो ये सब चीजें ट्रॉमा में आती है, लेकिन आई कैन स्टे अवेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई हैव स्टेड अवेक फॉर 72 आवर्स ड्यूरिंग माय स्टडीज टाइम. इवन अभी भी अगर मुझे 2 2 दिन भी जागना है तो आई कैन मैनेज इट.
I don't know if it's a skill or what. Like it's a weird thing to know. I can Yeah. go out without food for a long time. Although it's changing now. अब थोड़ा इंसान बन गए हैं तो it's changing. But I can go without food for days, for a day easily. कोई मतलब my functionality or functions keep going on. तो ये सब weird abilities हैं. I don't know. Nice, nice. Yeah. So, who was the last designer जिसको देख के बोला कि वाओ? देख के नहीं बोला मतलब मेरे काम देख के मेरे मतलब मेरे काम देख अलावा के उसका मेरे अलावा आपको देख के तो कभी भी वाओ नहीं बोला हाउ बोला होगा लेकिन वाओ नहीं बोला लास्ट डिजाइनर यार आई थिंक ब्रायन लविन जो है एक्स गिटहब अब वो कैंप साइट के को फाउंडर बन गए हैं तो द गाय इज रियली रियली कूल टू वर्क विद एंड हाउ I actually follow him on Twitter, and then he was like running this user research group. तो उसमें he was asking for volunteers, and I volunteered for a company called Polywork. हम्म, Polywork is like very cool startup जो कि LinkedIn को replacement में आ रहा है in a very cool way, like a good timeline which caters to like a few things that LinkedIn will never cater to and cannot cater to, like आपके हम्म, key events हो गए इस तरह की चीजें हो गई. It's a very good platform. तो उसके लिए they were doing a research and I got in touch with him for that. Or it was a very nice experience looking at him like going through work, and then it was very inspiring. So I think yeah, he's the guy. okay, जबरदस्त. हाँ. So, by the way, have you ever copied someone else's portfolio, or has someone copied your portfolio? Both actually. Like in my case, I did not copy something. I asked for a guy to like because like there was a project that we were both like not even both, like I was a small part of it. He actually did all the works. So I asked him if I could put it into the portfolio because they were asking me for web work. At that time, I was mostly working on mobile, so I had a lot of mobile work, but I did not have a web work. So I got it from him. That's one. That's not copying. But Do I know him? the part where my work was copied was very funny actually. And I mean like things like these happen. Please don't stop sharing your work because of this. और आई स्टिल शेयर माय वर्क लाइक आई नो इट वाज कॉपीड ब्लेटेंटली हुआ ये था और इट्स अ वेरी फनी स्टोरी आप लोगों को पता ही है मतलब आप इन्वॉल्व थे मुझे पता है जब आप ये पूछ रहे हैं but what happened was like there was this time when I think people were talking there was a thread on UXDP where people were asking about getting jobs internationally and how to like create portfolios that work. So I ended up sharing it with a few people actually on that conversation. A few people DM'd me and we had like I just showed them what I share usually. It's a PDF basically, so it was not that good back then, but like it was worth showing, and that's what helped me land the job in Malaysia actually. Right, so I gave this guy this portfolio of mine, and most of the work I think was actually from Venture Dive also. So what happened was like I think like a few days later, you and Shoaib reached out to me talking about like, yeah, can you urgently join a call? I was I think in the middle of like a town hall at my company at Malaysia. And I was like, I don't know what's up. Like I've left the company 6 months ago. Why? Abhi kya ho gaya? As a suddenly I have to be there. And they were like, it's very urgent. Please join quickly and everything. And then they brought me on a call. They told me like this guy is presenting your portfolio. He just changed the name, and even like on the PDF, if you press Command F, you can search. Like you will find my name there, but there's like a rectangle over it, and then it's his name on it. And he was presenting it to the same company where I worked for those like projects. That's the worst, man. Please, to everybody who's listening with a designer or even a non-designer, like please don't copy other people's work. You cannot like get anything out of it. Like yeah, I mean like you can get inspired. I still share my format with a lot of people. My format has been used for a long time now. I think more than 10 people I know who have landed jobs based on the the, the way it is done. But yeah, thank you for Yes, bringing that up. But still, I yes. think like it should not stop people from sharing. You should share as much as you can and help people. Like there will be some 1% of these bad actors in the society or in your mentee group or whatever, but you shouldn't stop. तो इससे आपने क्या सीखा वैसे? और हाँ, बाय द वे जब वो प्रेजेंट करे थे हजरत मेरा काम तो these guys actually pulled me in the call or I asked him a few questions about my own work which he ended up lying about, and then he realized I also like I was like freaking out कि यार ये क्या बन रहा है मतलब how can he lie so confidently, right? At least he had the confidence if you ask me, right? Which is a good skill. So I remember वो white board पे नाम भी लिखा हुआ था, ताहा, शुएब. hi, they were actually pictures of whiteboards with like stickies and everything, man. Yeah.
तो इससे फनी क्या, फनी। इस स्टोरी से क्या सीखा तुमने? मैं बता चुका हूँ स्टोरी से, मैंने ये सीखा है कि मतलब देर आर ऑलवेज बैड एक्टर्स इन द सोसाइटी, और इसकी वजह से आपको यू शुड स्टिल कंटिन्यू डूइंग शेयरिंग योर वर्क। इसकी वजह से मैं ये नहीं होगा कि आई विल स्टॉप शेयरिंग और आई विल से कि यार लोग कॉपी कर लेते हैं। आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट स्टफ, इवन इफ इट हेल्प समवन, लाइक इट्स नॉट, it's something that will hurt you as a copier in a long term, but I don't really care, man. Like it's okay. Nice. Yeah. चले, let's move to the second round of this talk show. Oh, rounds bhi Uh, hai, wow. yeah, it was the first round, and Okay. let's jump to the rapid fire round, Oof. where I will ask a few questions and you have to respond without any delay. Okay. Are you ready? Okay. So, first question is, what do you want for your next birthday? What do I want for my next birthday? A trip Next to a birthday. trip to Maldives. Oh, सही है ना? पर रैपिड फायर इंडोनेशिया नहीं है. नहीं, वो तो हो चुका है ना। पर पास्ट पास्ट में है, अब फ्यूचर की बात करें। Hmm. Okay. Second, what's the worst thing you have ever eaten? यार बचपन में लाइक आई वाज इन द स्कूल कॉल्ड पाक टर्क, तो ये टर्किश स्कूल था। पाकिस्तान और टर्की, टर्किश टीचर्स थे बेसिकली हमारे, और ये बड़ा एक इनिशिएटिव था। अब तो द स्कूल्स हैव क्लोज डाउन आई थिंक, या एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ द होल टर्की कूप थिंग। बट उसमें सीन ये था कि दे हैड लाइक दिस स्वीट एंड सॉल्टी डिश। आई डोंट नो व्हाट इट वाज कॉल्ड, बट इट टेस्टेड हॉरिबल। हॉरिबल मतलब मैं बता नहीं सकता। एंड we were staying at a hostel for 5 to 6 days in our summer holidays. We had like a hostel, our school का hostel था, तो we were staying there, and like everything that was cooked there, you were supposed to finish it no matter what. Like एक दफा आपने अपने आप को सर्व कर लिया, you cannot leave the food. That was the rule. You have to finish it. And I don't remember what it was. It was like a soupy thing. Worst shit ever, man. So tell me about your darkest secret of your professional life. Darkest Darkest secret. secret. Yeah. Astaghfirullah. Darkest secret. आई डोंट नो मैन। आई थिंक डार्केस्ट सीक्रेट क्या है, इम्पोस्टर सिंड्रोम ही है मेरा। मुझे जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय करियर आई वाज सो बैड इन विजुअल डिजाइन, लाइक आई डिडंट इवन थिंक आई शुड बी अ डिजाइनर। लाइक आई लिटरली was contemplating switching to a product manager or like a product role, कि यार ये तो नहीं हो पाएगा इतना विजुअल, क्योंकि लाइक माय की स्किल और मेरा जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा यूएक्स साइड है। यूआई साइड लाइक आई लैक वेरी बैडली, एंड आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट बेस्ड ऑन दिस फीडबैक, बट आई डोंट नो, लाइक इट्स नॉट अ डार्क सीक्रेट। और क्या डार्क सीक्रेट है ही नहीं ना मेरे, बता तो रहा हूँ। आई एम अ गाय हु इज ओपन इन पब्लिक लाइक फुली, तो देयर आर नो सीक्रेट्स मैन। Oh. Acha. Have you ever cheated on anything? चीटेड ऑन एनीथिंग? अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई, एग्जाम्स। एग्जाम्स तो पीक है। बस उसके बाद काम वाम में ये है कि इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं सिर्फ, ओनली। चीटिंग मैं क्या काम की होगा? बात थोड़ी कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था. लाइफ में तो बहुत चीटिंग करी है भाई। किसके साथ की ये नहीं? किसके साथ? वो वाली चीटिंग की बात हो रही है? चीटेड ऑन समवन? नहीं भाई, आई एम अ वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट मैन। क्या कर रहे हैं No, पब्लिक में हम लोग? just kidding. I was I was talking about only design. आई चीट ऑन माई सेल्फ, आई चीट ऑन माई डाइट्स, जो कि कभी नहीं होती। Uh-huh. And नहीं यार, इंस्पिरेशन लेते हैं हम सिर्फ। inspiration छापते नहीं है. छापना क्या होता है? क्या होता है छापना? होता ही क्या है? आई थिंक इट्स अ माइंडसेट थिंग यू नीड टू चेंज। Yes, definitely. Next question. What's the worst job you have ever had? हर्ड या डिड? Did. डिड। वर्स्ट जॉब आई एवर डिड। यार ऐसे पब्लिक में कॉल आउट करेंगे नाम ना तो लो किसी का भी, लेकिन एक इतनी कम हिंट तो जॉब्स हिंट करी हैं, पता चल जाएगा। हिंट तो कुछ दे सकते हैं. वर्स्ट मेमोरी बता सकता हूँ मैं जॉब की, वर्स्ट जॉब नहीं बताऊंगा ऐसे, क्योंकि देखिए हर जॉब की अप्स एंड डाउन्स होती हैं। और जाहिर सी बात है, आप पास जॉब्स को ज्यादा रोस्ट करते हैं। मैं करंट जॉब के बारे में तो कुछ बोलूंगा नहीं, ऑब्वियसली बेस्ट जॉब, बेस्ट छोटा एम्प्लॉयर। छोटा सा आंसर देना है. हाँ, यार वही एक दफ़ा क्लाइंट को मैं प्रेजेंट कर रहा था, उसने बोला कि बटन ऊपर लगा दो फॉर्म के, क्योंकि फॉर्म नीचे, बटन नीचे जा रहा था। तो मैंने बोला स्टिकी लगा लेते हैं यहाँ पे, देयर शुड बी अ स्टिकी बटन देयर सो दैट पीपल विल क्लिक ऑन इट, बट दे स्टिल हैव टू फिल द फॉर्म। नहीं, उसने कहा नो, यू आर अ टूल, डू एज यू आर टोल्ड। ये एग्जैक्ट लाइंस है क्लाइंट की। दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई करियर। इससे बुरा कुछ नहीं हुआ। वाह भाई, जबरदस्त. कोई फेवरेट डिजाइनर जिसके साथ काम किया हुआ हमने? जिसके साथ काम किया वो मैंने, हम्म. यार इसके साथ काम किया हुआ तो बहुत कम लोग हैं यार इसमें। आई थिंक मेरे लिए, आई थिंक द टॉप डिजाइनर फॉर मी वुड बी तला नवीद। ऑब्वियसली वी ऑल नो हिम।
He's the guy who I have seen, because like I've seen a lot of guys get into the like field, experienced guys who were hired after me, more experienced guys than me. But I think like the career growth he has is like crazy good. Like he has surpassed like a lot of us, and he has like really good work. So he's the guy I Nice. mentioned to almost everybody. So yeah, he'll be the one. Next question. Your dream job, exceptionally. Yeah, my dream job would be to have no job. I don't know why people have dream jobs. I'm not the kind of person who would have a dream job. लोग कहते हैं Google fang ये वो मतलब I don't have a dream job. My dream life would be to have no job and do the shit that I want to do, have fun. Why I Okay, don't know why people have dream jobs. nice. Next, if you were in a font family, what family would be? Like a serif or sans serif? No, not And serif, not sans serif. I'll be cursive. cursive. Why? Cursive. यार फन है इसमें, आपने पकड़ी नहीं लेकिन बट मैं हूँ ही टेढ़ा आदमी ना, बता दे रहा हूँ, गूफी एंड कॉमिक शिट. सेंस कॉमिक सेंस तो नहीं है? कॉमिक साइंस तो बोरिंग साइंस है ना, कॉमिक साइंस में पर्सनैलिटी नहीं है. I'll be like something like वो क्या क्या फॉन्ट होता था बचपन में जो यूज करते थे हम, फुल हेलोवीन टाइप का, दैट काइंड ऑफ शिट. कैलिबरी कैलिब्री. कैलिब्री एंड सीधा सीधा एरियल. फॉन्ट है. कैलिब्री ने गवर्नमेंट्स गिराई है, कैलिब्री ने, क्या बात कर रहे हैं आप. ओहो, नाइस. नाइस. बाय द वे कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास चैट से, यार ये ना करें. तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं. हम्म. फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक्स एंड यूआई यूएक्स साथ कंटिन्यू कर सकते हैं आपके? यार इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस, या क्या करेंगे, पैशन, या जो आपकी जिस तरफ आपकी इंक्लिनेशन है. सी आई नो पीपल वेरी गुड डिजाइनर्स हु आर इनटू बोथ, और इवन मोर देन दैट, लाइक वीडियो एडिटिंग, लाइक ऑल क्रिएटिव आर्ट्स एंड ऑल्सो डिजाइन. आई मीन लाइक आई थिंक इट्स अ गुड स्किल टू हैव. और मैंने काफी स्ट्रगल किया है, बिकॉज लाइक आई वाज वेरी यू नो, जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है देखे कि यार फ्रस्ट्रेट हो जाता था मैं, मतलब यूआई का काम करने में, पोस्टर्स अगर ग्राफिक्स साइड में जाता था, पर्सनली आई विल नेवर प्रेफर टू डू इट. Now I have like some like I wouldn't say expertise, like in now that I'm a bit better experience in UX, I'm exploring more in UI now. Say, or I would like to explore more, but I mean like you can do it like if you want to. It's up to you. People do it all the time. Are you doing it right now? Yeah, I mean like UI wise, like as long as it's in the confines of the product, yes. But like graphics and stuff, no, not really. Uh, And also I'm not good at it, so I mean. कौन कौन अच्छा है ग्राफिक्स और यूएक्स दोनों में? क्या मतलब कौन अच्छा है? कोई है ऐसी जनरली नजर दुनिया में? में, नहीं नहीं, आपकी नजर में जो दोनों चीज अच्छी अच्छी करता हो. मेरे सर्कल में, हम्म. जो है वो सोच तो रहा होगा मैं उसका नाम लूंगा, लेकिन मैं उसका नाम लूंगा नहीं. नाम किसका लिया जाए? या मेरे सर्कल में है, आई थिंक लाइक देयर इज अ डिजाइनर आई एक्चुअली वर्क विद एट माय ऑफिस राइट नाउ. He is a guy, he's an ex Kareem, now he's in Seera leading activities for us. His name is Kamil Rava. Kamil Rava. He's a ओके. Polish guy. He's like very good in terms of like the whole 360 degree पूरा डिजाइन फ्रंट एंड मतलब यूआई तक बहुत अच्छा. तो आई थिंक दिस गाय. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया चैट से. व्हाट्स योर वर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ डिजाइनर? क्या सॉरी? व्हाट्स योर वर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ डिजाइनर? अभी तो बताया यार मैंने आपको, हाँ, बस ये तो हो चुका एक्सपीरियंस ये है. हो गया. एंड व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर करियर? ओके, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय करियर. कोई है? यार कोई है ही नहीं इतनी बिगेस्ट कि मैं आपको बताऊं, बट ऐसे ये ही है कि हाँ, ये वाला. गिवन गिवन रिलेटिवली मेरे अपने करियर से अगर कंपैरिजन होता है तो कह सकते हैं आपके, हाँ मतलब ऑब्वियसली मेरा लास्ट जो प्रोजेक्ट था, जो मैं अभी आई वाज डिस्कसिंग कि वो इन हाउस जो टूल हम पूरा रीडू कर रहे थे, और उसके बाद एक हमारा मेन फनल का पार्ट था बड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वेबिनार्स के नाम से, उस पर आई वर्कड. और it brought like I mean like I'm not taking full credit of it कि सिर्फ मैंने काम किया, there were other designers also, there was like a huge team, marketing team, everybody involved, but it ended up bringing us a lot of money, like almost doubling our revenue to I think more than $50 million. That was one of the key milestones that I've achieved so far, so far. अभी Still बहुत कुछ going. है, अभी बहुत अभी कुछ तो करना है बहुत, अभी. it's just the beginning man, every day is या. a new beginning. टॉक शोज करने हैं नेक्स्ट अभी, टॉक शो करने, फिर पॉडकास्ट भी करने होंगे होपफुली ब्रो आप आइएगा मेरे पॉडकास्ट में इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. Next question I have you ever faced creative block? And if yes, then how do you come out of the situation? Every day is a creative block for me bhai. You open a frame, like you open Figma, create a frame and stare at it for like as long as you can.
और उसके बाद द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट टू स्टार्ट ड्राइंग रेक्टेंगल्स, दैट्स इट। ये सिर्फ एडवाइस है मेरी, कोई इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी सब मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। आई एम नोन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन इवन इन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मतलब अगर लेट्स से इफ आई गेट अ डेडलाइन ऑफ 10 days, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द 8th और द 9th day if Hmm. possible. And the only way I've been able to break this habit is by creating rectangles and writing something. Yeah, no, I'm serious, bhai. Just open up a screen, don't think of wireframes or anything, just put shit there and see if it works, even though if it's gonna be shit. Like that's the only way to break this habit. And I think like creative block कुछ नहीं होता, वो habits होती हैं जो कि creative block बना देती हैं. But बस like बाय द वे आपकी हैबिट है कोई स्केचिंग करने की? यार ऐसी काम casual काम doodling कह लें, doodling. आइडिशन करने से आइडिशन के टाइम पे? Yes, I like to pick up a marker and go on papers because it gets the juices flowing. But for my case, I usually prefer digital, like at least for mobile. I mean, like I don't care what the medium is as long as I can be fast and trash stuff. I'd go for it. But if when I get into these complex problems, I just go for the pen and paper or the board for sure. जबरदस्त। एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लोवेस्ट पॉइंट इन योर करियर एंड हाउ डिड यू डील विद इट? Lowest point in my career. So there were a few low points, basically because of changing personal situations, family situations. ये वो सही है. Actually, I'm the eldest in the house, तो ज़ाहिर सी बात है responsibilities और ये सब चीज़ें it keeps changing and shifting, right? So I used to be a very happy-go-lucky type. के कोई responsibility नहीं, कुछ नहीं. I was having fun around life, and there was a point when I was actually working in Venture Dive. I mean, like nothing, no offense to Venture Dive, but it was actually something personal for me when I came at a point where I wanted to do great work, but because we were in a client setting, we were always bound by clients. I also wanted to earn good money, take on more responsibilities, and like it took me a long 8 to 10 months of creating and dumping portfolios and applying and interviews and everything, and it was like a very low point for me. Like I was like in a phase where I was like not happy with my current job, but I had to keep working, kept performing, and that kinds of stuff. Like I think that's the lowest low in my professional life. नाइस। But again, it's tied to my personal whatever. So yeah, diplomatic answer. पॉलिटिशियन बन जाओ। Uh, Born politician, bro. फिर एक क्वेश्चन और आया है, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट योर एक्सपीरियंस विद डिजाइन स्प्रिंट्स बाय गूगल? ये कैसा क्वेश्चन है? यार देखें, टू बी ऑनेस्ट, लाइक नॉट जस्ट विद गूगल डिजाइन स्प्रिंट्स, जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इंडस्ट्री से पाकिस्तान में भी बाहर भी ये है कि दीज थिंग्स आर फॉलोड एज लाइक आई डोंट नो, लाइक कि यार बस ये जो है ना वो होली स्क्रिप्चर है, बस जस्ट फॉलो इट एज इट इज। आप इसमें आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा नहीं होता। मतलब दे आर जस्ट टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज दैट यू हैव टू फॉलो इफ दे सूट योर नीड्स। आई हैव सीन देम यूज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सो मेनी टाइम्स, आई कैन नॉट इवन लाइक काउंट। लाइक बहुत दफा ऐसा होता है बस गूगल डिजाइन स्प्रिंट कर लो सब सही हो जाएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। देर आर अ फ्यू डिफरेंट टूल्स, देर आर अ फ्यू डिफरेंट सेट्स ऑफ थिंग्स जो आप उसमें यूज करते हैं। 2x2 मैट्रिक्स हो गया कि इम्पैक्ट एफर्ट मैट्रिक्स क्या है, यूजर एक्सपीरियंस सॉरी यूजर इंटरव्यूज हो गए, यूजिबिलिटी टेस्टिंग हो गई। देर आर डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट प्रोडक्ट साइकिल जहाँ पे ये चीजें यूज होती हैं। यू हैव टू नो, दैट इज व्हाट इज माय आंसर। बाकी गूगल डिजाइन स्प्रिंट है टाइट चीज, वेरी गुड। इफ यू यूज इट ऑन द राइट टाइम, लाइक इट डज वंडर्स मैन। कभी अप्लाई किए? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, मतलब वेंचर लाइफ का पार्ट हो तो मतलब करिए अप्लाई। एज़ अ फैसिलिटेटर ही किया मोस्टली, क्योंकि जब तक मौका मिलता खुद फैसिलिटेट करने की, को-फैसिलिटेटर सॉरी, एज़ अ फैसिलिटेटर नहीं की। क्योंकि वो मौके चांस नहीं मिला कभी। लेकिन अब आई एम रनिंग लाइक दीज़ वर्कशॉप्स दैट आर एक्चुअली लाइक आई टेक अ फ्यू थिंग्स ऑफ द डिज़ाइन स्प्रिंट फॉर श्योर ऑल द टाइम। ओह नाइस। या लास्ट क्वेश्चन आया है, हैव यू एवर वर्कड ऑन अ फिजिकल प्रोडक्ट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम? ये पर्सनल अटैक ऑब्वियसली बिकॉज जो स्टार्टअप्स मैंने इनिशियली किए थे, राइट, इवन हमारा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो इट वाज अ जैकेट दैट यू कुड वेयर एंड प्ले गेम्स इन एंड यू फेल्ट वेयर यू वर गेटिंग हिट, यू नो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्टअप जिसकी मैंने सैलरी शेयर करी है, आई जॉइंड देम इन इस्लामाबाद। दैट वाज आल्सो अ हार्डवेयर प्रोडक्ट। देयर वाज अ वॉच यू कुड वेयर फॉर ट्रेमर पेशेंट्स, योर हैंड्स वुड शेक एंड देन वी वर ट्राइंग टू रिकॉर्ड लाइक what activities would have an impact on what parts of your like life, that kind of stuff. सो की है, और मैं समझ गया हूँ ये नाइस किसने वन। सवाल पूछा होगा। अभी भी एक क्वेश्चन हो रहा है, ओके। एज अ डिजाइन लीड हाउ मेनी डिजाइनर्स डू यू मैनेज एंड व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस रोल फॉर यू?
ओ चले, अच्छी बात यह है कि फर्स्ट जो उसका फॉर्मर पार्ट है वो आंसर होगा, तो लेटर पार्ट खुद ही डिसरिगार्ड हो जाएगा, क्योंकि आई एम एन आईसी एज अ लीड, आई एम लीडिंग अ प्रोडक्ट, आई एम नॉट लीडिंग एनीबडी अंडर मी। आई एम ओपन टू इट इन द फ्यूचर, और होंगे चैलेंजेस, बट जरूर मैं जब फेस करूंगा तो बताऊंगा। नॉट नॉट येट, नॉट येट देयर। फेयर है मेरा, लेकिन बड़ा फेयर है मेरा इस पे। नाइस नाइस। आई थिंक यही क्वेश्चंस अभी आए हैं। तो लास्ट राउंड में चलते हैं, जो एक अच्छा, एक और छोटा सा राउंड है, छोटा सा मुझे गेम लग है रहा था वो। बस वी आर एंडिंग। छोटा सा गेम है, या वी आर गोइंग टू एंड इन आई थिंक 5 मिनट्स। अच्छा, सो सो गेम है विस्पर चैलेंज। बेसिकली विस्पर दिस चैलेंज। इज विस्पर चैलेंज। सो ओह, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग गेम। इस पे 3 राउंड्स होंगे। हम दोनों एक दूसरे से खेलेंगे। कि होगा क्या कि कोई भी आपने जो है ना, मे बी यूएक्स रिसर्च या फिर डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी आपने कीवर्ड्स निकालने, और वो आपने अच्छा विस्पर करना है। अच्छा, मैं मे खुद निकालूंगा और खुद विस्पर करूंगा आपको। हाँ, पहले एक तो राउंड मैं मैं तो करूंगा, आसान फिर आप। निकालूंगा। एक राउंड मैं करूंगा, नहीं नहीं, आप। मैं निकालूंगा, एक आप निकालोगे। जो ठीक मैं है। निकालूंगा उसका विस्पर मैं करूंगा, आपने गैस करना है। हाँ, तो मैं तो आसान वर्ड्स निकालूंगा ना खुद से। आप अपने लिए थोड़ी निकालोगे, आप मेरे लिए निकालोगे। मैं आपको बताऊंगा, आपने गैस करवाना है। यस। तो गैस कौन करेगा? ऑडियंस, मुझे तो पता है। देखो, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आपने कोई एक वर्ड सर्च किया कि यूजर और रिसर्च। सही है। आपने जो है ना, लिप्स से बोला, अब बिना कोई आवाज निकाले, वैसे अच्छा 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 इस अच्छा तरह से बोलना है। अच्छा। जब आप ये बोलोगे तो ऑडियंस से भी गैस करेंगे और मैं भी गैस करूंगा। तो ठीक थर्टी है। सेकेंड का एक राउंड होगा। स्टार्ट मैं करूंगा, फिर ताकि आप उसको जो है ना देख लो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मैं 30 सेकेंड का जो है ना एक टाइमर लगा देता हूँ। ठीक है, एक एक वर्ड गैस करवाना है। यस। ठीक है। 3 वर्ड्स मैं गैस करूंगा, 3 आप करना बाद में। बाद में। पहले मैं, फिर आप, फिर मैं, फिर आप, इस तरह से करेंगे। अच्छा, टोटल 3 वर्ड्स। ओके, टोटल 3 वर्ड्स है। ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी ओपन द टाइमर। मुश्किल गेम है ये, ऑडियंस से सोर्स कर लेते वर्ड्स तो, लेकिन खैर लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं इसमें। चलें, टाइमर स्टार्ट हो गया। ओके, तो फर्स्ट आप। फर्स्ट वर्ड है। उसमें तीन उसको है, क्या नाम है, सेंटर वर्ड्स होंगे उसके अंदर। 3 वर्ड्स का। 3 वर्ड्स का है, ओके, एक दम एक ही है। दम शरारत चल रहा है फुल। हम्म, 3 वर्ड्स हैं ये। स्लो बोले, स्लो बोले। कस्टमर जर्नी मैपिंग बोलना है ये। आया। तो बहुत आसान है। चलो, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। नाइस। लगा ले 30 सेकेंड्स, मैं तो मुश्किल दूंगा। 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। दोबारा से बोलो। यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यूजर टेस्टिंग, ह्यूरिस्टिक एनालिसिस। गुड। नाइस। गुड। देखा, गुड वन, गुड इट्स वन। इट्स इजी। चले। ये तो हमने फील्ड इतनी छोटी कर दी है, तो इजी टू गेस है। ना, वैसे किसी के कमेंट्स आए हैं या नहीं आए अभी वहाँ पे? लेट्स चेक। हम क्या ऑडियंस से सोर्स करना चाह रहे हैं? ऑडियंस का देख रहा हूँ, ऑडियंस के कोई अगर रिस्पॉन्स आए हो तो। कन्वर्सेशन चल रही है उस ऑडियंस की वहाँ पे। अच्छा, एक्चुअली मसला है कि मैं तो देख नहीं सकता ऑडियंस की कन्वर्सेशन, तो मुझे पता नहीं है क्या चल रही है। चले, नेक्स्ट वर्ड। सही है, 2 वर्ड्स, इंग्लिश। क्या? यार ये तो वीडियो ब्लर होना शुरू की, तो डबल हार्ड हो गया चैलेंज। दोबारा बोले, आहिस्ता बोले। एम्पैथी मैपिंग। क्या बोले, इतने सिमिलर वर्ड हैं, डबल डायमंड। यस। डबल डायमंड, हाँ। आसान था यार, तो बहुत। वो ऑलमोस्ट टाइम में कर लिया। ऑलमोस्ट टाइम पे किया है। हाँ नहीं, वो वीडियो भी थोड़ी वो हो गई थी ना, तो हार्ड मोड पे चला हाँ, गया था। चलो कोई। अब ठीक है, देखो 1 सेकंड मुझे वर्ड सोचने में, मैं मुश्किल सोचूंगा ताकि आप गैस ना कर पाए। तुम सोचो तो बताना, फिर मैं टाइम स्टार्ट करूँ।
अ, यार एक तो आप गैस भी तो ऐसे कर रहे हैं, आप फील्ड से बाहर आएंगे, फील्ड में गैस करना बहुत अभी आसान अभी फील्ड में गैस करना है ना, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। है। ठीक है चलो। स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। कितने वर्ड्स? ये भी एंटिटी बता तो, देते, इतना आसान हो एंटिटी, जाता है यार, ये बताना नहीं। एंटिटी मैप ये बोला है देखो, तुमने। ये देखो जरा आप कितनी इतना देर चल इजी, रही इतना है। मैं इजी नहीं खेल रहा भाई, ये गेम यहीं पे खत्म कर दो ये गेम। इतना आप इजी, गेम अच्छा लेके आओ, गेम अच्छा इतना लेके इजी आओ। बोला है ये। गेम मुश्किल होना चाहिए, ऐसे नहीं होना जो चाहिए। मेरा वाला मुश्किल था, पहले दूसरा वाला बहुत मुश्किल था मेरा। नहीं वो भी वीडियो ब्लर हो रही थी, वरना मैं बता देता। 5 सेकंड के अंदर मैंने कर लिया। नहीं जीत गया, आपको मैंने जीत दे दी, चले। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं आप, हाँ, अबे यार। लास्ट लास्ट है बस। ठीक है। एक है। एक है। हाँ ये एक वर्ड है। क्या बोले दोबारा, स्लो बोले, स्लो बोले। टेस्टिंग, यूजर टेस्टिंग, ये तो दो वर्ड्स हो गए। टेस्टिंग क्या, क्या बोल रहे हैं? टाइम हो गया। शिट। यार वैलिडेशन था ये। ये कैसी वैलिडेशन थी? वैलिडेशन। सिंपल था ये, बहुत सिंपल वर्ड था। देखा, गैस नहीं कर पाए तुम। सही है, हार गया मैं। अब मुश्किल वर्ड निकाल के लाओ, आखिरी आखिरी राउंड है उसके। आ जाओ। स्टार्ट करूं? करे करे। कितने वर्ड्स हैं? क्या? यूजेबिलिटी कुछ बोल रहे हो तुम क्या? बाहर से बोलो। नहीं समझ आ रहा। एक सेकंड रुक लाड, क्या हुआ, खत्म टाइम भाई, बाय बाय। के। सॉल्यूशन मैपिंग। ओहो। ये तो मुश्किल था ना, आ, आखिरी के लिए बताएं। टू आखिरी टू हो हो गया गया, था। टू टू हो गया। चलो, राउंड हमारा टाई हो गया। आई थिंक एक क्वेश्चन और आया है अभी अभी। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सजेशन थी। सजेशंस भी आ रही हैं, वाह यार नाइस। नेक्स्ट एपिसोड के लिए। इस इसी इसी के नाम चलिए है, मैं विस्पर करते हैं। पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन। वैसे तो खत्म हो गया, चलो नहीं नहीं, पूछ मैं लो। पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, चलो अब आप एक पूछ बताएं। लो। आप बताएं आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है आपकी डिजाइन जर्नी का, करियर प्रोफेशनल बात हो रही है, नो पर्सनल अटैक। वर्स्ट एक्सपीरियंस? हम्म। छोड़ो यार, क्या करोगे हमके? क्यों रे, ये मुझे लग रहा है आप वहीं पे हैं शायद, तो इसलिए नहीं बता रहे। हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह का नहीं है। बट फिर भी थोड़ा, आप मुझसे तो पूछ लिया, अब आप खुद भी बताएं। ये कैसा होस्ट है जो खुद ही आ, ये हुआ था कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मैं एक ऐसी जगह चला गया था जहाँ मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था। ये तो प्रोफेशनल से ज्यादा डेंजरस में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, कहाँ ये चले बिजनेस हो गए? गया, बस इतना अच्छा। काफी है। इतना काफी, बाकी सिर्फ लगा था। ये तो लूज बॉल है। सही है, तो ठीक है। या सही है। और आप बताएं, आपके कोई मेंटोर्स हैं, बताइए। मेंटोर्स हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शेफ खान, जिसको आप भी जानते हैं, जो हम्म, आपके ही मेंटोर रह चुके हैं। समझ गया, प्रमोशन के लिए जो आप ये कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा। चले, सही। आई थिंक लेट्स रैप इट अप। तो बाय द वे, डू यू वांट टू शेयर एनी मैसेज फॉर आवर कम्युनिटी, दायरा कम्युनिटी? क्योंकि हमने भी दायरा के लिए काम किया हुआ पहले। हाँ। स्टार्ट, आप एक तरह से देखा जाए को फाउंडर्स में से भी हैं। नहीं यार मतलब को फाउंडर सिर्फ में से। सिर्फ कुछ मैंडेटरी एक्टिविटीज का पार्ट था मैं, वरना तो पैशन पे, हाँ मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट कुछ किया नहीं था मैंने, आई लेफ्ट बिफोर इट वी कुड इवन स्टार्ट। आई थिंक लाइक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और जो मतलब द वे यू गाइस आर एग्जीक्यूटिंग इज रियली नाइस टू सी, कि मतलब हमने जो इनिशियली चीज़ें निकाली थी जो उस वक्त पॉसिबल नहीं लग रही थी, फॉर एग्जांपल स्कूल्स में जाके डिज़ाइन थिंकिंग या इस तरह की मेंटालिटी को बिल्ड करना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो शुड बी अप्रिशिएटेड मोर।
और जो है ना इसमें आई थिंक दे शुड बी मोर वीडियोस ऑफ इट. आई वांट टू सी कि किस तरह जो है वो पूरी प्रेजेंटेशन हो रही है. मतलब इट्स गुड नोइंग कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, बट दे शुड बी लाइक अ फ्रेमवर्क कमिंग आउट ऑफ इट जो कि और जगह पे एक्सपैंड हो सके. तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी नाइस टू सी. एंड आई थिंक फॉर द कम्युनिटी आई थिंक लाइक पीपल शुड गिव आइडियाज, जो भी सजेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दायरा. सही, इट्स लाइक अ ग्रेट इनिशिएटिव जो कि मतलब वही वाली बात है कि मतलब कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी जितना आप बेटरमेंट कर सकते हो अपने सेट ऑफ स्किल्स से, सब चीज़ों से, यू शुड डू इट. एंड आई थिंक दायरा इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट. तो रियली कूल वर्क. अदर और देन दायरा, कोई डिपार्टिंग थॉट्स डिजाइनर्स के लिए, किसी के लिए? क्या होगा लाइफ के एंड में, सब क्या है, क्या हम किस किस रेस में भाग रहे हैं ये. यार आई थिंक लाइक इट्स जस्ट अबाउट, आई थिंक फॉर डिजाइनर्स जनरली इन पाकिस्तान, या जो भी जिस तरह के डिफरेंट सेटिंग्स में लोग काम करें, एजेंसीज में, प्रोडक्ट में, अलग अलग ऑब्वियसली गोल्स होते हैं, चीज़ें होते हैं. Do not get into the trap of these प्रोसेसेस और जो चीज़ें आप देखते हैं ऑनलाइन की, मतलब ये इस तरह होना चाहिए, यूजर रिसर्च मस्ट हैव है. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मस्ट हैव नहीं है, बट आई एम सेइंग कि देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू हैव given the set of problems that you are facing in that company. और फिर जो business के problems हैं, you have to be very aware about this stuff. तो I think this is the biggest थॉट फॉर एवरीबडी. मतलब ये मुझे भी बड़ा टाइम लगा एक्सप्लोर करने में कि यार ये सब जो चीज़ें हैं वो ठीक है, इट्स लाइक गाइड, लेकिन वो आप हर जगह, हर दफ़ा, हर जगह यूज़ नहीं कर सकते. एंड इफ सम थिंग्स फ्रॉम दैट इज नॉट हैपनिंग, इट डजंट मीन कि वो दैट जॉब इज नॉट गुड. आपको इम्पैक्ट भी देखना चाहिए, सब चीज़ें देखनी चाहिए, और मतलब यू शुड केयर अबाउट ऑल दैट स्टफ. सो आई डोंट नो, डिपार्टिंग थॉट्स. Nice. Thank you so much, Taha. So this was for our first guest, Taha. It was pleasure to meet you. Obviously, we will share the updates on our Facebook channel, Facebook page, and Instagram. So stay tuned and don't miss any updates from Daira. Thank you. Allah Hafiz.